Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021 and subject is computer. सेक्शन ए में है फिल इन द ब्लैंक्स है. हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. नंबर 1 में है द एंड टैग ऑलवेज कंटेन्स. यहाँ लिखेंगे स्लैश. 2 number are used to define a paragraph. and take p start take p and take p ये लेंगे यहाँ पर are used to define a paragraph. start take p and take p. Number 3 in the file name first html is the file name. ब्रैकेट में है फर्स्ट html and .html. we write here first html. Number 3 in the file name first html .html first html is the file name. 4 number dash tag shows the end of heading. in bracket है container and we write and tag shows the end of heading. bracket में से लेंगे हम and tag. Number 5 is the header for the largest text size. यहाँ है हम लिखेंगे स्टार्ट टैग HI. 6 an HTML document always starts with start HTML. Number 6 an HTML document always starts with start tag HTML. Number 7 dash is a set of markup codes or symbols that are used to add text, pictures and even sound on web pages. in bracket है notepad and HTML. we write in blank HTML is a set of markup codes or symbols that are used to add text, pictures and even sound on web pages. Number 8 an HTML document always ends with and tag HTML. Number 9 dash is the standard coding language used for creating web pages. लिखेंगे HTML. यहाँ लिखेंगे HTML is the standard coding language used for creating web pages. Number 10 an HTML document is written in a simple text editor like Notepad. क्या लिखेंगे यहाँ हम Notepad. Number 11 in an HTML document you can have 6 sizes of headings using tags from start tag HI and H to H start tag H6. in an HTML document you can have 6 sizes of headings using tags from start tag HI to start tag H6. 12 number the file extension of an HTML document is .html. dash tag shows
the beginning of heading. Dash tag shows the beginning of heading. Start tag head. Number 14. HTML allows you to style text in dash ways. Number 14. HTML allows you to style text in dash ways. In ब्रैकेट है 4 3, तो लिखेंगे 3 ways. 14. HTML allows you to style text in 3 ways. 15. HTML automatically adds a blank line before and after a paragraph. In bracket में है text paragraph. We write here paragraph. The HTML automatically adds a blank line before and after a paragraph. 16. The text between dash tags has information like author's name, date of creating the web page, etc. Start tag head and end tag head. Start tag head and end tag head. We write in blank start tag head and end tag head. Tags has information like author's name, date of creating the web page, etc. 17. You can write dash in capital letters or small letters. In bracket HTML tags and start tag we write HTML tags. 17 number, you can write HTML in capital letters or small letters. Number 18. The dash displays the path of the document in browsers. In bracket address bar, menu bar. We write here address bar. The address bar displays the path of the document in browsers. Number 19. An HTML document can be viewed using the dash. In bracket notepad and internet explorer. 19. An HTML document can be viewed using the Internet Explorer. 20 number, dash are used to change the text size of headings. In bracket styles headers. We write headers. Headers are used to change the text size of headings. 21 में हमें 21 नंबर की ब्लैंक लिखेंगे हम. In a flowchart, dash symbol is used for a condition. If A more than B, then yes path to be followed, otherwise no path is to be followed. In bracket diamond and parallelogram. In bracket diamond and parallelogram. In bracket we write diamond. In a flowchart, diamond symbol is used for a condition. If A more than B, then yes path to be followed, otherwise no path is to be followed. 22. A dash includes showing inputs, paths, action or decision points, and finally
द आउटपुट इन ब्रैकेट है फ्लो चार्ट के एल्गोरिदम। क्या है एल्गोरिदम? वी राइट इन ब्लैंक a flow chart. A flow chart includes showing inputs, paths, action or decision points, and finally the output. Blank number 23. A flow chart is drawn on the basis of algorithm and program. We write in algorithm. Number 3. A flowchart is drawn on the basis of algorithm. Number 24. Dash symbol is used to add values of variables A and B and store the result in variable C in a flowchart. In bracket oval and rectangle, we write rectangle. Rectangle symbol is used to add values of variables A and B and store the result in variable C in a flow chart. Number 25. And dash is the first step in developing a program. And number 25. N in bracket है flow chart algorithm. An algorithm is the first step in developing a program. We write algorithm. Number 26. The dash symbol indicates the value to be displayed at the end of the flow chart. In bracket decision and input oblique output. We write in 26. The input or output symbol indicates the value to be displayed at the end of the flow chart. 27. Dash symbol is used to write the value of variable A in a flowchart in bracket rectangle and parallelogram. Number 27. Parallelogram symbol is used to write the value of variable A in a flowchart. Number 28. And dash is a set of precise rules for accomplishing a task or for solving a problem. In bracket program algorithm. An algorithm is a set of precise rules for accomplishing a task or for solving a problem. Number 29. Number 29. The dash symbol indicates the path to be followed. In bracket flow line terminal. लिखेंगे यहाँ the flow line symbol indicates the path to be followed flow line. Number 30. The dash symbol indicates the choice between yes and no. In bracket decision terminal. We write decision. The decision symbol indicates the choice between yes and no. Now section B. Name the following. Number 1 है the browser used to view the HTML document. तो उसका नेम लिखेंगे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर.
Number 1, the browser used to view the HTML document, Internet Explorer. 2 number, tags that contain the content of an HTML. Number 2, tags that contain the content of an HTML document. नेम लिखेंगे स्टार्ट टैग बॉडी एंड एंड टैग बॉडी. नंबर 3, टैग विथ विच एन HTML डॉक्यूमेंट. 3 नंबर, टैग विथ विच एन HTML डॉक्यूमेंट. नेम लिखेंगे हम एंड टैग HTML. Number 4, the 3 ways to style the text in HTML. Number 4, the 3 ways to style the text in HTML. Name लिखेंगे bold, italic, underline. The 3 ways to style the text in HTML: bold, italic, underline. Number 5, the tab that display the title of the document. The tab that display the title of the document. तभी हम क्या लिखेंगे उसके लिए एक्टिव टैब. The tab that display the title of the document, active tab. Number 6, tags to underline the text. 6, tags to underline the text. Start tag U, underline के start tag U and end tag U. Number 7, tags to write the title of an HTML document. 7 number, tags to write the title of an HTML document. Start tag title and tag title. 7 number, tags to write the title of an HTML document. हम उसका नेम लिखेंगे स्टार्ट टैग टाइटल एंड टैग टाइटल. 8 number, the extension of notepad file .txt लिखेंगे हम उसका नेम. Number 9, the text editor used to write an HTML document. नेम लिखेंगे notepad. The text editor used to write an HTML document, notepad. 10 number, tags to display the text in bold style. Tags to display the text in bold style. Start tag B and end tag B. 10 number, tags to display the text in bold style. Start tag B and end tag B. 11 number, tag with which an HTML document begins. Tag with which an HTML document begins. Start tag HTML and end tag HTML. Start tag HTML and end tag HTML. Number 12, the bar that shows path of the document, address bar. 12 number, the bar that shows path of the document, address bar. Now section C. Section C में है write the names and uses of the following symbols. सिंबल से है हम उसके क्या यूजेस ऑफ द फॉलोइंग नेम लिखने का है. नेम्स एंड यूजेस ऑफ दी इसका क्या है यूज होता है. सिम यहाँ पता है. डिसीजन, ये है डिसीजन. इफ ए
more than B, then yes, path is followed, otherwise no path is followed. Decision: if A more than B, then yes, path is followed, otherwise no path is followed. 2 नंबर में है इनपुट आउटपुट. नेम इसका इनपुट आउटपुट. असाइन अ वैल्यू टू ए, राइट द वैल्यू ऑफ सी. इनपुट आउटपुट. असाइन अ वैल्यू टू ए, राइट द वैल्यू ऑफ सी. देखिए स्टूडेंट्स, नंबर मैंने जो आपको बता दिया है वो आगे पीछे हो गया है लिखने में. 3 नंबर में है टर्मिनल. टर्मिनल है इसका है जो हम इसका यूज लिखेंगे स्टार्ट एक्शन एंड एक्शन. इसका यूज करते हम इसमें किसमें करते हैं? स्टार्ट एक्शन में एंड एक्शन. नंबर 4 है प्रोसेस. ये है नंबर प्रोसेस. इसका जो यूज है ऐड ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन सी. प्रोसेस में है इसका यूज है ऐड ए एंड बी एंड जो फंक्शन है उसका वो लिखेंगे. तो फंक्शन लिखो या यूजेस लिखो उसका. स्टोर द रिजल्ट इन सी. हम जो फंक्शन है उसमें हम यूजेस भी लिख सकते हैं. जो फंक्शन क्या करता है और किस में यूजेस उसका क्या होता है वो हम लिख सकते हैं. यूजेस ही बताएंगे और जो फंक्शन भी बोल सकते हैं. टर्मिनल ये है 3 नंबर और जो है प्रोसेस वो है 4 नंबर. तो 5 नंबर में है ये फ्लो लाइन है. 5 नंबर फ्लो लाइन शोज द पाथ टू बी फॉलोड. वंस अगेन डिसीजन. इसका यूजेस है इफ ए मोर देन बी, देन यस path is followed, otherwise no path is followed. 2 number input output. Assign a value to A, write the value of C. Number 3 है terminal start action and action. Number 4 है process. Add A and B and store the result in C. Number 5 है flow line shows the path to be followed. Shows the path to be followed.